May I come? May I come in, sir? Yeah, please. Good afternoon, sir. May I sit? Yes, please. Introduce yourself. Thank you, sir. Sir, I am Sahil Meena and I have done my BTech from IIT Roorkee in year 2020, and from then I started preparing for the engineering services, and this time I cleared the mains examination, and that's why I am here in front of you. Is this the only exam you are preparing for or something else also? I have applied for GATE in this year and I have secured rank of AIR 169. So this is the other exam I have given. Okay. So how you have been supporting yourself since 2020? Sir, in the third year of my BTech, I have decided, I took around 6 months time to take my decision that I will go for engineering services, and I knew that it will take time, so I was prepared mentally, but last time I was not selected because I got selected for the interview, but I got I was fell short of 13 marks in the, so I was depressed for around 7 days, but everything went fine with the time. So there was no other option. I have to My question prepare was, again. how are you supporting yourself? Mentally. Financially? My parents are supporting me. Okay. So you like walking. Yes, sir. What is the difference between walking, jogging and running? Sir, running is a faster way running is running in which we speed is higher. Okay. What is Jogging is a slower form of running. What is the speed? What is the Okay, cutting so point? okay. So for generally I cover 3 kilometer. So if I'm running, so I will take around 15 minutes. If I'm jogging, I will take around 20 minutes. If I'm walking, I may take up to 30 minutes. So that is the difference. No, see, you are an engineer, so I am asking for what is walking, what is jogging, what is running. But you should give technical definition. In terms of this, up to this many kilometer per hour is walking. From this to this is jogging. From this to this is running. There is a definition there. Yes, sir. So you should know that. Sir, I've told you that in 3 kilometers I took different times for these 3 What activities. you took time is not the definition. Okay. Are you the authority to define? No, sir. Then when we say technical thing, then you should give a technical reply. Okay, sir. I will see it on prepare it for that. What is walking? Up to what speed we call it walking? Then there is something called fast walking also. Okay. That is up to what speed? How it is different from jogging? Are you aware how fast walking and jogging are different? Sir, running is fast, and in simpler terms, jogging is a slower means of running, and walking is even more slower. In which that's the basic definition. I don't know the speed. Read about it. There is a difference. Okay, I will read it about it. Yeah. If you bend your knees, it's not walking. Okay. Okay. So there's a technical difference. In fact, in the fast walking competition, they watch every step. And you're disqualified if you run in between. Okay, sir. So find out about it. Okay, sir. I will find out. Okay. So you are a civil engineer. Yes, sir. What makes you feel proud of being a civil engineer? Some things which India has done in last 10 years, some things as civil engineer feats which have happened. So India has developed the tallest statue of the world, that is Statue of Unity.
Okay, and India has also made the new Parliament building, and Okay. CPW has designed that thing. Okay. And I mean you need building construction for every project, and I mean civil engineering is required in every Now, aspect, something unique which has happened. which has happened recently. Yes, in the last 1 decade, something unique which has Sir, I think the tallest structure is that we have something made. has happened in Kashmir. Okay, so Chenab Bridge. Sir, it is a railway bridge, and it is the tallest railway bridge if we measure its height from the surface level of the river. So it is a railway bridge which is made up from steel. Okay. What is the height? Sir, I don't remember the height. Okay. What other thing which is unique? It is a arc bridge. I mean, unique. That you have told. Mhm. Something else? I mean Some tunnel? tunnel. No sir, I don't know about tunnel if it's related. You have heard of Atal Tunnel? Atal tunnel, no sir. You have not heard of No, Atal sir. Tunnel? Come on, yeah. I'm sorry, sir. I should have known about this. You should. I mean, I will see it. Okay. So a tunnel in a mountain Hmm. which is to be made, Okay. almost say 5 kilometers, 6 kilometer long tunnel. Hmm. So will we dig from one side or will dig from both sides? Sir, I'm not sure about this. I'm not sure about this, sir. So let's say you are the civil engineer, I tell you, please bore from both sides. Okay. I'll give you 2 boring machines. Hmm. How will you make sure that the 2 bores will go and meet at the same point? What method you will use? Ultrasonic pulse velocity test may be used. Hmm? Ultrasonic pulse velocity test may be used. Ultrasonic pulse velocity test. Hmm. On what? I mean, from where we are starting to make the tunnel in that mountain. I mean, it is used to measure the velocity and the distances. So I mean, I don't know, sir, if it will work or not. I'm not sure, sir, about. I think maybe GPS may be used. Okay, find out more about it. Okay, sir, I will. Yes. Meena ji, what was your BTech project? Yes, sir. I made the 𝐂𝐲𝐬 bridge, and near the IIT Roorkee only, and so we made its design and all. This was your major project Yes, sir. last semester? Yes, sir. I mean, yes, BTech project for final BTech semester. Yes, sir. So what are your considerations about abutments? How you took the load on abutments, then design and... I mean, sir, we considered the different types of loading, different types of IRC loading, and the loading which is the self weight of the bridge, and all the loading which will come on the abutment. Which all the loadings? Yes. Which all the loadings you have to define, no? Sir, there are 3 classes, I think: class AA loading, class A loading, class B loading in the IRC code. So what is the amount of A class loading in terms of kg per square centimeter or newtons per? Sorry, sir, I don't know about this. Chalo, theek hai. Then how do you decide it? You just followed the IRC code and you put the beam. Based on IRC code, you have designed the beam or you put the beam? Obviously, we will design, then put the beam. So how did you design the beam? Traffic, how much traffic you considered? For which traffic you designed the beam? I mean, we have taken around the 500 CPVD for which we have constructed that thing, and we have considered the most severe positions of the load for which the moment under the shear force would be maximum. So for which we have designed. So what is difference in class A, class B and class C? On what basis they are classified?
Sir, I don't know about the details. Sorry, sir. Whatever you speak, you have to know. Yes, sir. Okay. Are you comfortable about cross drainage works? I mean, I know the definitions of the types of cross drainage work we have. There are many cross drainage works near to IIT Roorkee, Yes, sir. your college. Not in my college, but in Ganga Canal there is a cross drainage structure. You studied in IIT Roorkee, na? Yes, sir. So near to your college, there are many cross drainage works. In a On cross Upper Ganga Canal. Huh? Yeah. Hmm. Why do we need these cross drainage works? Sir, when our canal and the natural river are meeting at the same level, then to provide the continuous supply of the water from the canal, we make cross drainage structures, and we generally try to avoid this structure because these are very costly. But when we cannot avoid, we have to make the cross drainage structure. So when they intercept at the same level, then we have to make the cross drainage structure so that their flow can be separated from each other. If they are intersecting at same level, as you told, then which cross drainage works we provide? Level crossing and inlet and outlet. In which case we will provide aqueduct? Aqueduct we will provide in case in which we have to carry our canal over the natural drain, and in which the bed level of the canal is above the level of the flood level of the river. Can you tell me what is super passage? Super passage is also a type of a cross drainage structure in which we carry our natural drain over the canal, and in this the bed of the natural drain is above the full supply level of the canal. What is difference between weir or barrage and dam? Sir, these are they are obviously constructed across the river, and weir we generally use to measure the flow, and dams and barrages are used to control the flood and other purpose like providing the water for irrigation, water supply, and also for hydropower generation. But the weir its height is low, so we generally pass the water over its crest to measure the flow. To measure the flow? I mean the weirs are used to measure the flow. Weir is only used to measure the flow. That is the primary use of weir? No, sir. These are, other uses are also like for, yes, I've told like flood control and all these things, but only weir can, also used for measuring the flow. But it's not the primary, What is the primary? Primary, sir, I'm not sure. No issues, sir. Okay, start करें. Sahil, what is reinforcement? Reinforcement, sir. Reinforcement is can be of any form like steel, glass, or any plastic to, increase the strength of the material like we do in the concrete, or we can also we also provide reinforcement to provide ductility in the brittle material like concrete. So we generally provide reinforcement to increase the strength, durability, and also to provide ductility in that material. Okay, so what type of reinforcements are used in concrete? Steel reinforcement, and and we also use reinforcement like glass. In fiber reinforced concrete, we use material like glass, plastic, these things also. Which are the best materials? Best material, steel would be the best. Okay, so what are the different types of steel that we used in reinforcement? We use mild steel, that is Fe250. We used HYST bars that are Fe415 and also Fe500. So what is this Fe415, Fe500? Sir, the
F is just a symbol used to represent, and the 250 or the 415 are their yield strength. Yield strength. Mm. So which bar is better in case of, let's say, concrete we are using? Sir, if we have the fund, then we should go for HYST bars because they have the ribs on their surfaces, so they will provide better bond between the concrete and the steel, and also they will have the better strength because they are more than will provide better strength because they have the 415 as their yield strength. So we should go for FE 415 or FE 500 if we have the funds available. So why we take yield strength for measuring, or yield strength as the criteria? So why don't we use ultimate tensile strength? Sir, okay. So because in the RCC, the fracture will only take place due to crushing of the concrete. So the steel would not crack. So we generally take the yield strength as the criteria. And in the stress strain curve, the fracture point is not clearly we don't have exact value. We have exact value for yield strength only. So we go for the yield strength to determine its type. So if we don't have a clear fracture point, we can take somewhere close to, we can take the lower limit. We can take, but we have to specify its name like FE 250 or FE 400 because they are very clear yield strength. So that you can take as for FE 450, where the range would be from 440 to 460. You can take the mean of the different samples that you have tested. Sir, I think maybe generally in the RCC, the failure will only take place by the crushing of the concrete. So it will not take place for the fracture of the steel. So when the cement fractures takes place by crushing, okay, why we have to provide the reinforcement? Cement is excellent in compressive strength. Yes, it is excellent in compressive strength, but it is brittle, so it will not give us the ample warning before the fracture, and steel will provide the ductility. So, and steel is also provided in the tension region where the tension stress will take place. So it will take the entire tensile stresses. It will provide the ductility, and providing steel will also provide ample warning. So we can take the preventive measures, the corrective measures. What is difference between resilience and toughness? Resilience is the area of the load deformation curve up to the elastic limit, and the toughness is the area of the load deformation curve up to the fracture limit. So why we measure this area? What does this physically signifies? It signifies its resistance against shock loading, so that if a material has more like you said toughness, so it has more better resistance against the shock loadings, and it simply signifies the strength. It signifies the energy which it can take before breaking or fracturing. So why we have distinction that resilience is there, toughness is there? Why don't we define only toughness? Why resilience is required? Because sir, in steel we have we have now recently discussed that we define classify the steel on the basis of elastic limit. So we have also defined the area of that curve, and we have given the name resilience. So since you don't define the steel in terms of the ultimate tensile strength, why you need toughness? You can only define it by yield strength and resilience. I'm not sure then. Okay, thank you. That's all, sir. Okay, so your interview is over. Yes, sir. How did it go? It was fine. I think I need to improve better on my DEFs and things we have discussed. I will go look up and will prepare for it. We'll give you feedback in a few minutes, please. No. Okay, thank you. You can wait outside. back. And Okay. So what was your score in last interview? The last year. Last year you appeared for interview? Yes, sir. What was the score? 106. Okay. Thank you.
May I come in? May I sit? हाँ जी प्लीज। Thank you. देखिए यू आर अ स्मार्ट कैंडिडेट, Thank you, sir. बट डिड यू ट्राई टू एनालाइज कि पिछली बार 106 क्यों मिले थे? I have analyzed, and the thing is that I was preparing for PYQs. So like say they have a question like rainwater harvesting. So I have just prepared the definition of it, but they were asking more in detail, and I was just mugging up the questions, but I was not thinking that what practical question they can ask, like you asked for the elastic limit and these things. But now this time I have improving on that thing, and obviously I am expanding my technical knowledge, because they can ask anything. You cannot be safe by reading one book, two books. You have to expand your knowledge, and I mean the luck matters, but you have to give your best. And देखो इसमें थोड़ा सा तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप हिंदी उपयोग कर लो, अगर आप हिंदी में yes, sir, कंफर्टेबल but हो। in the last year, sir, ठीक है। the chairman did not give me the permission to speak in Hindi. चलो कोई बात नहीं, पर फिर ये मत बोलो बीच में, Okay, sir. ठीक है? अगर बोर्ड वालों को पता है तो अच्छी बात है। Formal है. हाँ, अगर बोर्ड वालों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता तो आप उनको मत बताओ, ठीक है? उनको तो पता ही है. मत बोलो, थोड़ा सा वो आपने तकिया कलाम बना दिया, वो नहीं करो, Okay. ठीक है? और दूसरा सवाल को सुन करके थोड़ा रुक करके फिर उत्तर दो। इमीडिएटली जवाब कोई मांग भी नहीं रहा है। नहीं सर, अगर जवाब अच्छे से आता तो इमीडिएट नहीं निकलता है ना फिर वो। नहीं, थोड़ा सा सुन के हल्का सा अपने माइंड में एक बार घुमा लो क्वेश्चन को, फिर तो वो उत्तर देने की जल्दी में गलत उत्तर देने का लाभ नहीं। जो पूछा गया है उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना है। ठीक है? इंग्लिश में बोलिए वो अच्छी, आपकी इंग्लिश में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यू आर सक्सेसफुल इन दैट। पर ठीक है, एक तो नहीं बोलना है, इसका ध्यान रखना आपको। दूसरा, सोच करके फिर उत्तर देना। और जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं आता, आप सिंपली बोलिए कि भाई नहीं, आप बोलिए सर आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट दिस, बात खत्म। वो टॉपिक ही बंद हो गया, आगे चल पड़ेंगे, कोई इस पर नंबर नहीं कटेंगे आपके। पर अगर आप गैस कर रहे हो तो फिर बोलो मे आई काइंडली गैस, फिर वो देन यू कैन गैस, ठीक है? तो यू आर स्मार्ट कैंडिडेट, टॉल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। हाँ जी बताइए। देखो टेक्निकल अभी थोड़ा और पढ़ो, गौर कर रहे हैं तो थोड़ा और टेक्निकल की ज़रूरत है। वाला पॉइंट मतलब वो मैं भी पकड़ रहा था, तो कई बार ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जमघट में बैठे हुए दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, और उनसे बात करे जा रहे हो, मटर गश्ती चल रही है, और वो दोस्त कुछ ऐसे है कि आपको लीडर मान बैठे, तो आप बोल रहे जानते हो अरे तुम्हें पता है कि मैंने ऐसे किया था। अच्छा, आपने नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो। अच्छा As if समझ रहे हो, आपका जो एटीट्यूड है ना वो ऐसे आ रहा है। अच्छा तुम जान रहे हो मैं ऐसे किया था, वहाँ पे वो सब है ना पिताजी की उम्र है। हाँ, पिताजी से ज्यादा ही है। ठीक है, 60-65 ये उम्र के लोग बैठे होंगे, उनमें से कोई बुरा मान गया, मान लो किसी ने पॉइंट कर दिया, अब जैसे सर ने पॉइंट कर दिया, सर चेयरमैन है, ठीक है, तो अब भाई बाकी अब कौन क्या क्या बोलेगा, और वहाँ नहीं बीच में भी टोक सकते हैं, टोक देते हैं, बीच में भी टोक सकते हैं, बोले पहले तो बोलना बंद करो, ऐसे करके बोल देंगे। ठीक है, एक इंटरव्यू में चेयरमैन साहब बोल दिए थे, कोई पूछता था ये बताओ, तो वो एक और सवाल पूछ लेता था कि सर इसका बताओ उसका बताओ, फिर 3 बार हुआ, चेयरमैन ने बोला स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, तुम इंटरव्यू दे रहे हो हमारा ले रहे हो तो वो ऐसा कर देंगे। तो अपना ठीक है, ये तो मॉक है, तो मॉक में आप
आई इसलिए हो कि गलतियाँ पता चले, उसे सुधारे। तो टेक्निकल और थोड़ा ब्रशअप करो, सवाल बिल्कुल ध्यान से सुनो। जैसे सर ने आपको बताया तो आपने कहा कि सर जवाब आता है तो जल्दी निकलना चाहिए, नहीं, जितना आदमी में ठहराव होगा उतना वो पसंद करेंगे। वो बड़बोला आदमी नहीं पसंद कर रहे हैं, वो अफसर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें ठहराव है। अफसर को तो सुनना पड़ता है, बिकॉज किसी ग्रीवेंस से कोई लेके आया, हाँ, यू हैव टू लिसन, ठीक है, डोंट वरी दिस दैट, तो बोलता कम है। आप तो अफसर बनने जा रहे हो, आप तो लेक्चर दिए जा रहे ऐसा नहीं है, सोचो समझो और वापस जवाब दो। जितना ठहराव होगा ना उतना अच्छा होगा। और मान लो कोई सवाल आपको नहीं आता, उसमें ठहर गए तो पता चल गया। हर सवाल में हम एक 2-4 सेकंड का ठहराव ले रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला हमें आता है नहीं आता है, ये भी एक प्लस पॉइंट हुआ। ठीक है सर। Sahil, there are 2 feedbacks from my side. First is when somebody is asking you, he is giving you 2 terms. What is difference between failure, fracture? किसी ने ये 2 टर्म अलग अलग अगर नाम दिए हैं तो रैंडमली नाम नहीं दिए, दोनों का क्लियर कुछ मतलब होगा, दोनों में कुछ डिस्टिंक्शन होगा, आपको नहीं पता होगा। FE 450 यील्ड स्ट्रेंथ पे डिफाइन किया जाता है, अल्टीमेट पे क्यों नहीं किया जाता, उसका प्रॉपर रीजन है। जस्ट बिकॉज, हाँ जी, यस सर, जस्ट बिकॉज कि वो टेस्ट करके आप एग्जैक्टली 440 नहीं बता सकते हो इसलिए हम उसको UTS नहीं लेते हैं, इसका ये लॉजिक नहीं है। सर कैन आई नो द लॉजिक? लॉजिक इसकी फेलियर इज ऑलवेज कंसिडर्ड व्हेन मटेरियल यील्ड्स। ओके, हम आपका ये फोन है, ये क्या टूट के अलग हो जाएगा तब इसकी यूटिलिटी खराब होगी क्या? इसका स्क्रीन क्रैक भी कर गया तो इसकी यूटिलिटी खराब है, विच हैज रीच्ड द यील्ड पॉइंट। मटेरियल यील्ड इज कंसिडर्ड एज अ फेलियर, इट विल लूज इट्स यूटिलिटी। एग्जैक्टली, आपका ब्रिज है, उसमें स्टील अगर फेल कर गया तो वो ट्विस्ट हो गया, वो गिरा नहीं है बट उसका यूटिलिटी खत्म है, व्हीकल उस पर नहीं जा सकता। सो फेलियर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट। रेजिलियंस, टफनेस, अगर 2 अलग अलग टर्म है, दोनों का क्लियर इंडिकेशन है, दोनों क्यों क्यों यूज किए जाते हैं। टफनेस इज डिफाइंड फॉर अ टर्म वेयर यू एक्चुअली कंसिडर द फ्रैक्चर, जहां पे आपको फ्रैक्चर ही करवाना है, वहां पे टफनेस का रिक्वायरमेंट होता है। तार को तोड़ना है मुझे, बेंड कर दूंगा तो फेल हो गया बट वो फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज डिफाइंड बाय टफनेस। बट मुझे उसको बेंड करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज डिफाइंड बाय रेजिलियंस। सो दीज आर 2 टर्म्स जो अलग अलग डिफाइन किए गए। आप ऐसे ही बोल दो कि नहीं ये ऐसे ही होते हैं, दैट इज नॉट अ लाइक गुड वे ऑफ आंसरिंग। आप पहले सोचो कि क्यों डिफाइन किया गया, आपको नहीं पता हो सकता, सो यू कैन से सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस बट आई फील दैट इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अंडरस्टैंडिंग, तो इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव करो। एंड वेन एवर समबडी आस्क्स यू क्वेश्चन, बी वेरी सीरियस अबाउट दैट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो मैं बता दूंगा, वो स्लैंकनेस जो आ रही है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट लेके आपको गलत सवाल की तरफ ले जा रही है। दिस कुड बी वन रीजन जिसकी वजह से मतलब आपके क्वेश्चन शायद गलत हुए हैं कुछ, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। बी एब्सोल्युटली सीरियस विद द बोर्ड। वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे दे आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास में बहुत बहुत नॉलेज होगा एंड वो आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे, आप एक भी वर्ड इधर उधर बोलोगे दे विल कैच यू ऑन दैट। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू स्पीक, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि कई टीचर्स बताते हैं जब आप किसी को आंसर कर रहे होते हो तो आई कांटेक्ट रखिए, और कई टीचर्स ऐसे बताते हैं कि जिसको आप आंसर कर रहे हो तो उसके साथ आई कांटेक्ट रखिए, बाकी जो 3 लोग हैं उनके साथ भी रखिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि उनको एक सबके साथ है ना। देखो, जिसने पूछा है सवाल पहले उनकी तरफ देखो, फिर बाकियों ने भी नंबर देने हैं तो थोड़ा सा उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। जैसे आप नॉर्मली बात करते हो तो कैसे करते हो? एग्जैक्टली।
नॉर्मली जिस दोस्त ने सवाल पूछा या जिससे तुम बात कर रहे हो उससे बात करते हो, बाकियों की तरफ से पीठ मोड़ लेते हो क्या? बाकियों को भी तो देखते हो ना बीच में, सेम थिंग, कन्वर्सेशन है, ठीक है। सर जैसे कि आपने डेव से, IIT रुड़की से और चैनापुरी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, तो उससे कुछ ऐसा कुछ और जो प्रिपेयर कर सकें, जैसे कि आपने अटल टनल का पूछा था, वो मैं वो पता ही नहीं कहाँ से। नहीं, आपको पता होना चाहिए। देखो, सिविल इंजीनियरिंग में जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, शुड नो अबाउट इट, तो ज़रूरी है। आफ्टर ऑल तुम्हारी रोजी रोटी है यार। हाँ सर। तुम्हारी नेट रोजी से रोटी पढ़ना है में और कहाँ से पढ़ोगे? वही सोर्स है, हम भी वहीं से पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर है, नेट है। तुम्हारी 3 टनल, एक ईस्ट में है, 2 इधर है। एक मनाली वाली, मनाली और वो जो ले रोड पे जो टनल, हटा टनल है, और तीसरी जो यहाँ से जाती है श्रीनगर टू ले, उसके बीच में है। नेट पे तीनों देख लो और तीनों देख लो। और बिल्डिंग्स में है अभी जो मूर्तियाँ वगैरह लगी हैं बड़ी, पटेल साहब की मूर्ति है, सरदार पटेल की, स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ यूनिटी है। और एक अभी शंकराचार्य का स्टैचू अनवील हुआ है। लाइक दैट। हाँ, कल परसों इनॉग्रेट हुई है। बनारस दिल्ली? कहाँ? ये नहीं पता, बट एक बहुत बड़ी बनारस बनारस में हुई है। डालोगे तो हो जाएगी। हाँ, तो शंकराचार्य ये यही है, मॉरल्स हैं। बाकी ये वो है जो ब्रिज है, चेनाब ब्रिज, उसको थोड़ा सा देख लो किस तरह का क्या है। हिस्ट्री सिविल में तो यही है। बाकी अपना देखो, प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट अपना क्या है इसको बता दो। ABC आपने बता दिया, ABC किस बेसिस पे क्लासिफाइड है आपको पता ही नहीं, तो वो सब थोड़ा इन टोटलिटी अब तैयारी कीजिए, ठीक है ना। IIT से पास आउट लड़के से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको इतना कौतूहल होना चाहिए कि कुछ भी उसकी फील्ड में बड़ी बात हुई है तो उसके बारे में खोज खबर लेगा। जो वहाँ से रोटी खाना चाहता है तो खबर लेगा। जैसे टाइम पास किया है, चलो डिग्री कर लिया, कुछ जा करके टाइम पास कर लिया, वो नहीं। बट IIT प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार ये दौड़ने वाला घोड़ा है, तो दौड़ के तो दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर आई मिस्ड वन पॉइंट। हाँ जी। साहिल, आपने इंट्रो में बीच में स्टार्टिंग में ही हाँ, आपने बोला था depression कि आई वाला। वेंट इनटू डिप्रेशन। हाँ, वो जरूरत नहीं थी। नेगेटिव बात बताने नहीं किसी। दैट वाज वेरी नेगेटिव। That is ये आपको नहीं negative, that aspires on your personality. Yes, sir, I will take this. दैट्स ऑल। Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Good luck. हाँ? ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, शिमले जी